रिकॉर्ड भी कर ले। One second. अच्छा हाँ जी, चलो ठीक है, ये आ गया। हाँ जी। सर थ्योरी नहीं करेंगे? नहीं, कौन से वो पेपर्स? हाँ नहीं, अभी तो बस एमसीक्यू मैंने I've picked an MCQ. We'll do theory later on, ठीक है? ये this is related to the whole of chemistry. So start a bit के let's start with the first question के working कहाँ पे working हम यहाँ पे कर लेते हैं. Just 1 second, where's the rough? अच्छा, working के लिए बस यहाँ पे. अच्छा, now this one. हाँ जी. सर, आपने जो वैंडरवाल्स फोर्सेस थी उसके लिए आपने सिर्फ साइज और सरफेस एरिया आपने सिर्फ बताया था ना? हाँ, साइज और सरफेस एरिया, ठीक है. उसके अलावा तो और कुछ नहीं? नहीं, उसके अलावा साइज और सरफेस, हाँ बस वही तो है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है. अच्छा चलो, अब स्टार्ट कर लेते हैं कि वी कैन स्टार्ट विद ये जो हम करें द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द एवोगाड्रो कांस्टेंट, वो एक कोई ना अपना वो कैलकुलेटर साथ रखो. सो व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द एवोगाड्रो कांस्टेंट, द फर्स्ट वन, ठीक है. इवन आई हैवंट सॉल्व्ड दिस पेपर बिफोर. तो व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द एवोगाड्रो कांस्टेंट इज करेक्ट? इट इज द मास ऑफ 1 mole of any element. So it is not the mass. Avogadro constant is a number. ठीक है, it's the number of particles. So it's the number of particles. Like when you say 1 mole, that means it's this many number of particles. So it's not the mass. It is the mass of atoms. It is not the mass. पहली चीज है, it's not the mass. It is the number of atoms in 1 mole of neon. And the other one is it is the number of atoms in 12 grams of any element. So the first one is it is the number of atoms in 1 mole of neon. That is correct. Okay, when you say you have 1 mole of any atoms, that is obviously how many atoms will you have? You will have 6.02 times 10 power 23. The other thing is neon is a monoatomic gas, so it's going to have the same number of atoms. When you say 1 mole of atoms, it's going to be 1 mole of atoms because it's a monoatomic gas. It is the number of atoms in 12 grams of carbon 12 hota hai, not any element. Because when you say carbon 12 or when you say carbon, 12 grams of carbon is equal to 1 mole. So the last statement is also incorrect, that it's not the number of atoms in 12 grams of any element. It's the number of atoms in 12 grams of specifically carbon 12. ठीक है. अच्छा, next is clear है? ये पहला clear है? Is this clear to everyone? Yes, sir. अच्छा, फिर next you've got हाँ जी. सर, आपने लाइव का ऑप्शन चूज किया, रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं? नहीं, रिकॉर्ड ही हो रहा है. ओके, मतलब अब उस पर रिकॉर्ड हो जाएगा ना, तो उस पर पड़ा रहेगा आप, ठीक है. वरना वो असल में वो दूसरा है ना, वो जो तुम मुझसे मांगते हो ना, तो उसमें होता है कि उसको ड्राइव पे अपलोड करना, वो सारा ना तो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो वो बीच में से हासिल ना खत्म हो जाएगी. अच्छा, दिस वन, व्हिच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट ionization energy of iodine? तो फर्स्ट ionization energy of iodine is going to be, कौन सा is the correct option? डी. ठीक है, that's going to be D. There's going to be a gaseous iodine atom and you're going to remove 1 electron. That's about it, and both of them would be gaseous. Then you have structure represents 3 compounds each with 4 carbon atoms per molecule. Which row is correct? Ab aage question, it's about intermolecular forces and it's about melting and boiling points. So first one, which one
out of these, it's got 4 carbon atoms per molecule. Which one out of these is going to have the highest boiling point? First one. Which one is going to have the highest boiling point? सर Z का होगा. ठीक है, Z. And Z किस टाइप का कंपाउंड है? It's an ionic compound, right? So ionic compound where you have a positive ion attracted to, it's sodium ion, and the other one is a negative ion. So you have positive ion, negative ion, positive ion, negative ion. So there's a strong force of attraction, and they end up forming a lattice, right? So वो होता है, और so ionic compounds always have higher boiling points. The other two, now you're left with two. These are molecules. These are covalent molecules. This one is also a covalent molecule. So starting with this one, it's got an OH group. So what type of intermolecular force will OH have? क्या होगा OH के अंदर? O और H इकट्ठे होते हैं तो क्या होती थी? कौन सी intermolecular force होती थी? If O and H are together. ठीक है, that's going to be hydrogen bonding. ठीक है, हमने कहा था कि O, N और F. If they are directly bonded to H, that's going to be hydrogen bonding. So ionic is going to have the highest one, followed by the next one would be, actually the next one, just hold on a second. Actually, lowest boiling point would be this one. So this one is going to be hydrogen bonds. And this one will only have permanent dipoles. When this side would be negative, this side would be slightly positive, this carbon. So it's only going to have permanent dipoles. And I told you that hydrogen bonds are वो जो होते हैं वो stronger होते हैं, ठीक है? Is that clear? Sir, can you explain this permanent dipoles one more time? Permanent dipoles में क्या होता था कि permanent dipoles में you had like you have an HCl molecule, right? So the HCl molecule would be polar. The electrons would be closer to Cl, and this would be negative, this would be positive. So यहाँ पे you have an atom of oxygen. Just focus on this one first. Ignore the other parts. You have an atom of oxygen. The electrons would be closer to, they will be closer to oxygen, right? So that means the electrons would be closer towards the top. So that side would be negative, and that's the bottom side would be positive, right? Is that clear? Yes, sir. अच्छा, लेकिन यहाँ पे there's going to be hydrogen bonds. Hydrogen bonds is an extreme version of, like when O and H are bonded together. Sorry, okay. अच्छा, so वापस से अच्छा, so hydrogen bond is an extreme version of a permanent dipole. Like it's a much stronger version of a permanent dipole. So when OH H are bonded together, the O has a lot of lone pairs. And O is very electronegative. So the electrons get pulled very strongly towards the oxygen. So this has a very strong negative charge, and this has a very strong positive charge. So the dipole that's created in a hydrogen bonds, that's a lot stronger. Or ये वाला तो वैसे ही strong है because it's a fully ionic compound. So it's an ionic compound. So ionic compounds are obviously, they form giant ionic lattices. They have very high melting points. So this one is going to be the highest one. And the permanent dipole is going to be the weakest one. So it's going to be YXN Z. ठीक है, ये क्लियर है? सर हाँ जी सर, ये जो Y आपने लेबल किया है ये तो इंस्टेंट डायपोल होगा क्योंकि लाइक ये तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं. तो परमानेंट होगा ना, ये इंस्टेंट थोड़ी होगा. मतलब ऑक्सीजन नहीं हमेशा सर, तो वो इलेक्ट्रॉन, फ्लक्चुएट नहीं करते. नहीं मुझे बताओ, ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है? या सर है. तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किसके करीब होंगे? दे वुड ऑलवेज बी क्लोजर टू ऑक्सीजन, राइट? यस सर.
तो मैंने कहा था कि हर मॉलिक्यूल में ना every molecule there's going to be van der Waals forces. There would be fluctuation that would be happening, ठीक है? लेकिन mainly तो it will always be a permanent dipole, right? Because this would always be negative. थोड़ा बहुत fluctuate होगा, कभी थोड़ा सा ज्यादा negative होगा, कभी थोड़ा सा कम. तो वो मैंने कहा था van der Waals forces are present in all molecules. यानी HCl का कोई molecule it's got a permanent dipole. But the electrons will not be, I mean, it's going to be a permanent dipole, but it's not going to be like this side would, I mean, this kind of negative charge that would be sometimes higher, sometimes slightly lower. So van der Waals forces are always present. Wo jo instantaneous dipole, induced dipole, the fluctuation that's happening, that would still be there. Like, and it's always I mean, this one is a permanent dipole plus van der Waals forces. Clear hai? So this is a permanent dipole. So van der Waals forces would always be there. So this one is also going to have van der Waals. और ये वाला जो है ना, इसके पास भी क्या होगा, van der Waals होंगी, ठीक है? Is this clear? Okay, sir. Yes, sir. अच्छा, फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं. This is about the shape of the molecule. So उसी को रेफर करो कि how many pairs of bonds. Remember I told you कि पहले तो carbon, let's focus around this carbon atom, ठीक है? तो अब इसमें पहली जो चीज है ना, वो तो ये कि इसके कितने pairs of bonds है? 3 है. Remember double bond, when you were doing shapes, I told you okay, double bonds would be counted as one thing क्योंकि they're together. So it's 3 pairs of bonds, right? तो अगर 3 pairs of bonds होते हैं तो क्या shape होती है around this carbon atom? What? Trigonal planar. ठीक है, तो that's going to be trigonal planar, that's going to be fan shaped, ठीक है? तो वो इस तरह करके होगा. It's going to be fan shaped, and fan shaped में the angle would be what? 120. ठीक है, so it's going to be 120. तो x जो है वो तो पता लग गया कि 120 है. तो C is exactly the same क्योंकि it's 3 pairs of bonds. I mean this other one. This is exactly the same. 1 pair, 1 pair, 1 pair. So it's exactly the same. So that is also going to be what? 120, right? और ये क्या होगा when carbon makes 4 bonds? So what would be the angle when carbon makes 4 bonds or 4 pair of bonds? Sir, 90 degrees. tetrahedral होगा. तो कितना होगा? एक 90 is 90 is wrong. Sir, 109 होगा obviously. हाँ, 109 point, खैर वो तो obviously आखिरी option है. मतलब 109.5 exactly होगा. So remember 4 Sir, pair of इसका bonds. shape tetrahedral था ना? हाँ, tetrahedral was ये वाला जो carbon होगा, this is going to look like this. Okay, but it's going to have NH2, H, and but NH2 would be on one side. H would be over here. Going into the page, COH would be over here. और बाकी side पे मतलब वो बाकी molecule चल रहा होगा, ठीक है? तुम्हारे side पे. So this carbon would kind of look like this in 3-dimensional space. ठीक है? अच्छा, अगले पे आ जाओ. Ideal gases. You've got ideal gases. It says flask Q contains 5 dm³ of helium at 12 kilopascal pressure, and flask R contains 10 dm³ at 6 kilopascal pressure. If the flasks are connected at constant temperature, what is the final pressure? So there are 2 ways of doing this. Remember PV0 nRT, ठीक है? ये ideal gas का question है. There are 2 ways of doing this. पहले तो दोनों flasks, one is 5 dm³, the other one is 10 dm³. So let's think of 2 flasks. That's one, that's the other one, and they're connecting them together. This one is 5 dm³, और दूसरा actually size में बड़ा था. That was so one of them was 5 dm³, the other one was actually 10 dm³. So तो इसको सही कर लो कि अच्छा, the other one was 10 dm³. चलो इसको सीधा लिख लेते हैं. This one is 10 dm³. और उसने कहा कि जो 5 dm³ वाला flask है ना, that has a pressure of 12 kilopascals, the other one has a pressure of 6 kilopascals. So this one has a pressure of 12 kilopascals and that one has a pressure of 6 kilopascals. निकालना ये कि if you connect them together, let's say that you connect them with some tube, or beach में ना there's a valve and you open that valve.
Like once they're connected together, the two gases will mix. Can somebody just guess in which direction would the gas particles flow? Left to right or right to left? Just make a wild random guess. Sir, left to right? नहीं, मुझे तो यहाँ पे gases are at higher pressure. यहाँ पे gases are at a lower pressure. So remember, gases would always move from a higher pressure to lower pressure. मतलब आपका जो car tire है ना, what happens like if you open the valve, the gases in your car tire at a higher pressure, right? So they leave the car tire. So gases will move from left to right. पता नहीं आपने क्या कहा था कि right to left कहा था, left to right कहा था? Sir, left to right. ठीक है, फिर सही है. अच्छा, left to right. अब इसको solve करना, like now the two containers are connected together. That means they've kind of become one container. So what is the final pressure? There are two ways of doing this. One of them is the technical way, mathematical way. Okay, let's say I don't know how many gas particles there are in this container, right? And I don't know how many gas particles are. I know the volume of the container. So if I use PV is equal to nRT, and I don't know what the temperature is, but they're saying that the temperature is kept constant. So it's going to be 12 into 5, 12 kilopascals. So that should be converted into pascals. And the volume must be converted into meter cube. So 5 into 10 per minus 3. So 10 per 3 or 10 per minus 3 वैसे ही cut हो जाएगा. So PV would become equal to 60, and that's equal to nRT. Now, I don't know what the moles are, so I'm going to call it N1. हो सकता है gas ज़्यादा हो सकता है gas कम. I don't know how much gas particles there are. I don't know what the moles are. So I'm going to call it N1. And the other one, I'm going to apply PV is equal to nRT, and that's going to be 10 into 6. So that's also 60. Into the moles, which I don't know how many moles there are. The temperature is the same. So that's it. So it's 60. So this one is also 60. N2 and RT. अब ये जो था ना, ये पहले की कहानी, PV is equal to RT. If I calculate the moles would be RT divided by 60. If I calculate the moles over here, they're also RT divided by 60. So I found the moles in both containers. In terms of R and T, I found the moles in both containers, which are exactly the same. दोनों के moles equally आ रहे हैं. That means the moles over here of gas and the moles over here of gas are exactly the same. Now the containers are connected. So if you have connected containers, तो अब क्या होगा कि if they are connected together, what will happen is कि the two volumes are now one. तो आपका नया volume क्या है? That's 5 dm cube plus 10 dm cube. It's 15 dm cube. So think of the two containers as becoming one. So it's 15 dm cube. Pressure का आपको कोई पता नहीं. Pressure ही ढूंढना है आपने कि pressure क्या है. And if the two containers are connected, the new moles are going to be N1 plus N2 because the two gas particles would mix up. इधर के उधर चले जाएंगे उधर. So they've become one. So the total moles would be ये जो 15 dm cube जो space अब create हुई है ना, when you combine the two together, that's going to be N1 plus N2. Is this clear? ये clear है सारों को? Sir? हाँ जी. सर ये आपने PV equals to nRT आपने कराया था, लेकिन ये मतलब आगे जाकर आपने यूज नहीं किया था. ये कौन से टॉपिक में आता है मेनली? मतलब गैसेस में आता है कि प्रेशर निकालने के लिए और मोल्स निकालने के लिए और टेम्परेचर. स्टेट्स ऑफ मैटर में सर. हाँ, और ये हमने किया था, मेरे ख्याल से हमने तो किया था कि क्वेश्चंस किए थे. मतलब क्वेश्चंस ज्यादातर सिंपल आते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है. ठीक है. अच्छा, उसमें वो है ना, प्रेशर, वॉल्यूम और मोल्स और टेम्परेचर, उनकी रिलेशनशिप है ना. R कांस्टेंट होता है, which is 8.31. अच्छा, एनीवेज, इस केस में अभी तक हम कहाँ पहुंचे? हम यहाँ तक पहुंचे कि हमने इसके मोल्स निकाले थे N1. we found the moles of N2, and फिर हमने दोनों कंटेनर्स को कनेक्ट कर दिया. So that means they've become one container. So the volume is now 15 dm cube. The pressure, I have no idea what the pressure is जब दोनों को combine कर दिया.
But I know the moles now. It's N1 plus N2. मतलब यहाँ पे जो gas के moles है and these gas moles, they've combined together. So it's now N1 plus N2. So I'm going to find pressure again. I'm going to apply PV is equal to nRT again using the new values. Pressure, I don't know. Volume I know is 15 dm cube. It's going to be 15 times 10 power minus 3. Remember, it should always be in meter cube. Moles मुझे पता है कि it's N1 plus N2 into RT. Now all I have to do now is pressure is 15 times 10 power into 10 power minus 3. N1 की value क्या थी? It's this one. What is the value of N2? That's this one. So it's basically 2 times RT divided by 60, or we can call it 1 over 30. मतलब 2 times हो गया ना कि दोनों को add करोगे तो double हो जाएगा. So that's going to be RT divided by into RT. अच्छा ये मैंने गलत किया यहाँ पे, इसे चेक ही नहीं किया, ये उल्टा होगा. 60 divided by RT है ये. और ये भी 60 divided by RT है. So this would actually become, if you add them together, it's going to become 120 divided by RT. And it's being multiplied by RT again, so the RT would get cancelled out. And your final answer would be that pressure is going to be 120 divided by 15 into 10 to the power minus 3. So what do you get for pressure? क्या value आ रही है इस केस में? Sir, I have a question. Yes. सर आपने 120 लिखा है क्योंकि आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है N1 प्लस N2 को, लेकिन आपने RT सिर्फ RT लिखा है, 2RT नहीं लिखा. नहीं, इन दोनों को ऐड किया ना, इसके मोल्स और इसके मोल्स को ऐड किया. 60 डिवाइड बाय RT और 60 डिवाइड बाय RT को ऐड करो तो क्या आता है आपके पास? सर तो वो 120 डिवाइड बाय RT आ जाएगा. ठीक है, मतलब दोनों के मोल्स ऐड अप हो गए ना कंटेनर में. ये बात क्लियर है? सर आंसर 8000 आ रहा है. अच्छा 8000 यानी 8 किलो पास्कल्स, राइट? मतलब वो था पास्कल्स में आ रहा है तो इट्स गोइंग टू बी 8 किलो पास्कल्स. ठीक है. अच्छा पहले तो ये इसके ना दो मेथड है सॉल्व करने के. ये लेंथी मेथड है. ठीक है, दिस वन इज कमिंग आउट टू बी 8000 पास्कल्स. तो रिमेंबर मैंने पहले तो आसान वाले में मैं आता हूँ पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत दफा कभी बार आ चुके हैं. इसका जो मैथमेटिकल तरीका है ना दैट्स वेरी लेंथी. ठीक है, क्या आप क्या करते हो कि पीवीसी को एनआरटी लगाते हो और यू फाइंड द मोल्स ऑफ द गैस इन दिस कंटेनर कि N1 के मोल्स ना ये आ गए. यू अप्लाई पीवीसी को एनआरटी, यू फिगर आउट के दी N2 के जो मोल्स है ना वो ये आ गए. दोनों के मोल्स आ गए. फिर जब दोनों कंटेनर्स आपस में कनेक्ट हो गए तो अब ये दोनों कंटेनर्स एक कंटेनर बन गए. तो आप फिर नई कंडीशंस लगाते हो कि भाई वॉल्यूम अब 15 डीएम क्यूब हो गया, दोनों के मोल्स कंबाइन हो गए, इट्स N1 प्लस N2. तो नया प्रेशर ढूंढो आप. ठीक है, तो आप वही वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हो कि 15 डीएम क्यूब. प्रेशर नहीं पता, मोल्स ऐड अप हो गए, दैट्स N1 प्लस N2 एंड यू मल्टीप्लाइड बाय RT. और जब आप सॉल्व करते हो तो RT कैंसिल आउट हो जाते है, यू एंड अप गेटिंग द फाइनल प्रेशर. ये क्लियर है? इज दिस क्लियर, दिस मेथड? सर हाँ जी. सर वो इजी मेथड कर दें. हाँ इजी में. अब इशू ये कि एमसीक्यू में इतना लंबा चौड़ा इतना टाइम तो नहीं है आपके पास के. सो रिमेंबर कि इजी जो शॉर्टकट है ना वो ये, and remember the shortcut. This shortcut would only be applied if you have temperature constant. ठीक है, remember that the temperature has to be constant. क्योंकि if the temperature is not constant तो temperature अपनी बीच में ना कहानियां वो उसमें आ जाएंगी इक्वेशन में. ठीक है, फिर वापस PVC को एनआरटी करना पड़ेगा. And the reason I gave you this method was sometimes maybe the temperature is not constant. ठीक है, तो वो फिर आपको ये सब करना पड़ेगा और बीच में टेम्परेचर की भी फ्लक्चुएशन बीच में डालनी पड़ेगी. ठीक है, जैसे इसमें तो T कांस्टेंट था इसलिए वो कैंसिल आउट हो रहा है, उसमें फिर T की वैल्यूज वुड हैव टू बी एंटर्ड. ठीक है. अच्छा बट एनीवेज
The easy method is if the temperature is constant. You want to find the new pressure or the average pressure if you connect two containers together. So all you have to do is, but the condition is temperature has to be constant. All you have to do is, if जब दोनों containers को connect करते हो तो total volume क्या है? That's 15 dm cube, right? So 5 dm cube of the gas or 5 dm cube volume out of the 15 dm cube is exerting a pressure of 12, and the other one is 10 out of the 15 dm cube is exerting, so 10 dm cube out of the 15 dm cube is exerting a pressure of 6 kilopascals. तो ये आपने करना है. You find the percentage volume. What percentage volume is exerting? If I write down the formula for this, it's going to be, you're going to sum up the fractional percentage volume into the pressure that it's exerting. और बस उन दोनों को sum up कर लियो, you'll get the total pressure after the containers are mixed up. The 5 out of the total 15 dm cube is exerting a pressure of 12 kilopascal. 5 out of 15 is exerting 12 kilopascal. And 10 dm cube out of the total 15 dm cube is exerting a pressure of 6 kilopascal. So इस सारे को add up करो, you'll get 8 kilopascals. That's it. Is that clear? सर हाँ. सर ये वो केपी की तरह नहीं है जिसके अंदर हम लोग मोल फ्रैक्शन यूज करते थे? हाँ, ये है उसी तरह, क्योंकि आप, लेकिन ये उसका केपी से कोई ताल्लुक है नहीं वैसे. ठीक है, केपी तो एक टोटली डिफरेंट चीज है, लेकिन वो फॉर्मूला थोड़ा सा उसी तरह है, वो पार्शियल प्रेशर वाला निकालने वाला नहीं है. तो फॉर्मूला थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, लेकिन इट्स गॉट नथिंग टू डू विद दैट. ठीक है, क्लियर है बात? यस सर. और ये याद रखना कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इट डजंट कम वेरी ऑफन. वैसे तो नॉर्मल पीवीसी को एनर्जी के क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, कि वो सिंपल आपको कहता है कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मोल्स निकाल लो. सो यू जस्ट गो एंड फाइंड द मोल्स. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी सिंपल. ये क्वेश्चन है, इसका जो टेक्निकल मेथड है मैथमेटिकल, वो तो टाइम लगेगा उसमें. इतना टाइम आपके पास प्रॉब्ली पेपर में नहीं होगा, तो इसलिए बेहतर है कि यू रिमेंबर दिस मेथड. वो वाला मेथड इसलिए बैकअप में रखो कि शायद अगर उसने टेम्परेचर चेंज कर दिया ना, फिर आपको उधर रिलाई करना पड़ेगा कि मोल्स निकाल रहे होगे तो यहाँ पे there would be some other temperature, there might be some other temperature over here, so maybe they might change the temperature, so you have to be very of that. लेकिन is this method clear? How do you find average pressure if you just connect two containers together? Is this clear? Yes sir. So मैं next पे move कर रहा हूँ कि अच्छा, so the other one is solid, liquid, and gases. Probably states of matter. So sodium chloride is a solid. So okay, which one is correct? पहले तो correct को take कर लेते हैं. Particles held in a rigid structure. I think they are. They are stationary. अब stationary का मतलब नहीं पता कि stationary का मतलब exactly वो क्या कह रहे हैं, because particles they are stationary, but they do vibrate about their fixed position as well. And sodium chloride is kind of, solids are resistant to a change in shape. But it's harder to actually, you can change the shape of anything, but they are resistant. Well, it's harder to actually break it up. As a water can easily be compressed. No, that's wrong. So ek to galat ho gaya. Particles move water mein, that's true. They're not stationary and cannot easily be compressed. That's true. Because water and the particles are like right next to each other, so you can't really. तो अगला क्यों ये गलत है? Air cannot easily be compressed. Well, it can easily be compressed. तो बस D रह गया, ठीक है. So the answer is going to be, it's going to be D. वो तो आसान था. इसमें आगे के which letter represents the activation energy? So you're saying that the reaction pathway diagram for the catalyzed reaction and the uncatalyzed reaction between N2 and H2 is shown. ये इनमें से which one is the catalyzed and which one is the uncatalyzed? Sir, B and D is uncatalyzed and C1 is catalyzed. C is without catalyst, उसकी activation energy ज़्यादा है. B और D catalyzed होंगे. हाँ, मैंने उल्टा कह दिया. तो इसमें ना you have C is the one that's not catalyzed, ठीक है.
वो बी जो है ना वो 2 स्टेप्स में हो गया, मतलब पहले एक चीज बनी है, दिस इज नोन एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है, कि यहाँ पे there was something formed in the middle, and that something then did another reaction and it ended up producing something else, ठीक है। तो अब ये कि वो कह रहा है कि which letter represents the activation energy for the first step, the first step in the presence of a catalyst, the first step जो होगा वो ये वाला होगा, that's the first step, step 1 फिर step 2, ठीक है, 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, वो ऑब्वियसली ये होगी, ये होगी ना, सर ये होगा, बी होगी। और ये याद रखना कि एक्टिवेशन एनर्जी जो थी वो रिएक्टेंट से, यू स्टार्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, ठीक है। अगर उससे कहा होता ना सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी बताओ, सेकंड स्टेप यहां से शुरू हो रहा है, दिस इज द पॉइंट वेयर इट्स स्टार्टिंग, सो सेकंड स्टेप ऑल्दो ही हैजंट शोन इट, सेकंड स्टेप एक्टिवेशन एनर्जी वुड बी दिस वन, और ए जो है ना वो uncatalyzed reaction की ना, it's the activation energy for that one. तो अगले में मूव करते हैं, वो कह रहा है what is the bond energy of the bond between the NO atoms, ठीक है, the enthalpy change is given, so bond energy का क्या फॉर्मूला होता है कि you figure out how many bonds are broken, reactants में जो bonds होते हैं they're broken, and you figure out how many bonds are formed. तो आपने ब्रेक क्या किया, you've broken an N triple bond N, एक ही तोड़ा आपने, you've broken one of them, and you've also broken an oxygen double bond oxygen, तो ये आपने तोड़ा है, this is going to be endothermic, and then exothermic is the bonds that are formed, so you formed 2 NO bonds and you don't know what the enthalpy change is, and the total should be equal to the enthalpy change which is 180 kilojoules. तो बाकी आपने प्योर टेबल सॉरी डेटा बुकलेट से you have to figure out, so N triple bond is 944, so that one is 944, वो तोड़ा आपने, ऑक्सीजन तोड़ा है, that's 496, 4 पता नहीं क्या है, एक सेकेंड, डेटा बुकलेट is here, so you would have to refer to the कहाँ गई bond energies, अच्छा ऑक्सीजन 496 ही है, वही है, तो that is 490, अच्छा that one is 496, और फिर आपने 2 फॉर्म किए NO के, जिनको मैं X ले रहा हूँ, ठीक है, I don't know what they are, वो फॉर्म किए and the enthalpy change would be equal to 180, तो quickly tell me what X is, does anyone have a calculator, ये निकालो कि X क्या आ रहा है, और रिमेंबर enthalpy change में ये पहला फॉर्मूला होता है कि 1 ways bonds broken and the number of bonds that are formed. वो exothermic है, bonds broken is endothermic. This is going to be in plus, this is going to be in minus. Sidra, did you do this? सर 630 है, So 630 आ गया, नहीं Sidra, you have to divide by 2 as well, ठीक है, there's a 2 over here, so it's going to be A. Clear है? अच्छा अगला part, the next part is that you've got an equation and you have to, which species is oxidized in this reaction, so Sn over here is Cl is -1, Sn would be probably +2, Cl is -1, अच्छा Hg में this is going to be +2, Cl would be -1, SnCl4 में this would be +4 and this would be Cl is -1, इसमें it's going to be Cl is -1, so Hg would be +1, तो बताओ कि which one got oxidized? सर SN +2 से +4, तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था। अच्छा अब आ गया क्वेश्चन केपी का, तो the question is that there is 3.6 moles of hydrogen gas and 2 moles of iodine vapor are placed in a reaction, तो इस पे क्या करते हैं आपके, what you do is कि you start off with the initial moles, कि you've got 2HI, तो start के अंदर initial, how many moles do you have? You have 3.6 moles of H2 and 2 moles of, तो इसके हैं 3.6 और उसके हैं 2.0, that's the start, और फिर उसने end में he's told us the equilibrium moles, so he has given us
okay, what's happening at equilibrium. He's saying that 3.2 moles of hydrogen remain. So 3.2 remain. And you're supposed to find out the moles of all the other now there's going to be a lengthy calculation for this because it involves, there's not actually going to be a lengthy calculation. I'll explain why. You don't need to, I'll explain why. Let's first figure out the first part. So the first thing is, there is no HI initially. You added H2 3.6 and now at equilibrium 3.2 remains. So what happened to the 0.4 moles that are missing now? What happened to those? वो reacted हो गए. They reacted, so that means 0.4 moles of H2 reacted and it turned into HI. So if it turned into HI, so 1:2, so how much HI would be produced? 0.8. तो इसका मतलब है कि at equilibrium HI would be 0.8 and H2 reacts with I2. तो अगर इसके 0.4 react हुए तो इसके भी 0.4 ही react. So this would be 2 में से 0.4 निकल गए. So you are left with 1.6, right? तो आपके पास moles आ गए, right? Equilibrium moles. सारों के आ गए. अच्छा, अब ये करना है कि since you have the moles, what would be the expression for Kp? Kp would be the partial pressure of HI, and that's going to be squared, and divided by the partial pressure of H2, multiplied by the partial pressure of I2, products over reactants. So it's going to be HI squared divided by H2 and I2, right? Is that clear? That's Kp. There's one problem that, what do you need if you want to find Kp? You need partial pressures, right? So did they give you pressure in the question? No, sir. तो मसला ये कि pressure निकालोगे किस तरह, ठीक है? अच्छा, so remember this for Kp, and this also applies to Kc as well. मतलब Kc के ऊपर भी आप यही चीज अप्लाई करते हो किसी और तरीके से, लेकिन दोनों के अंदर अप्लाई होता है. And that is, if the numerator terms and the denominator terms are equal, मतलब अगर dimensionless है, unitless, like यहाँ पे भी pressure squared हो रहा है, नीचे भी pressure squared हो रहा है, ठीक है? So the pressure term will get cancelled out. But the numerator में terms और denominator में terms, if they are equal, they're going to get cancelled out. तो pressure डालने की जरूरत भी नहीं है बीच में. अगर बीच में वो into वो partial pressure निकाल के mole fraction के साथ multiply करके अगर आप pressure बीच में डाल भी दो ना, तो the numerator terms and the denominator terms are equal. तो वो जो into total pressure वो सारा कर रहे हो, that's going to get cancelled out anyways. तो वो डालने की जरूरत ही नहीं है, आप simple mole से काम चला लो, ठीक है? So remember this. Kc के अंदर भी, Kp के अंदर भी. If an equation has equal moles on both sides, that means when you do numerator denominator, they're going to have equal, I mean the terms would be the same. On numerator में भी उतनी terms होंगी, denominator में भी exactly same terms होंगी. तो वो जो pressure वाला part है, that's going to get cancelled out. So the shortcut is कि you can use moles directly. So in this case, it's going to be 0.8 squared divided by 3.2 into 1.6. और ये मैं करके भी दिखा देता हूँ कि अगर मैं प्रेशर बीच में ले भी आता it would not make any difference. It would be exactly the same thing. ये बात समझ आई? सर हाँ सर, अगर टोटल प्रेशर होता तो हमें वो एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता ना? क्या होता अगर टोटल प्रेशर गिवन होता? नहीं, मैं कहता कि मैं दे देता हूँ, चलो टोटल प्रेशर, लेट्स से टोटल प्रेशर जो है ना वो 3 एटमॉस्फेयर्स है, ठीक है? कर लो वो एक्स्ट्रा स्टेप, ठीक है? तो एक्स्ट्रा स्टेप क्या था कि वो उधर जाके कर लेते हैं कि इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी इसके मोल्स कितने हैं 3.2, तो मैं दोनों सारों के बारी बारी निकाल लेता हूँ, pH2 निकाल लेता हूँ. सो इट्स गोइंग टू बी क्या होगा 3.2, मुझे टोटल बताओ कि व्हाट्स द मोल फ्रैक्शन, 3.2 डिवाइड बाय द टोटल 0.8 ऐड करो तो क्या होगा, दैट्स गोइंग टू बी 4 plus 1 5.6, right? यस सर. into 3 atmosphere, यही होगा ना? ये हो गया. यस सर. अच्छा, प्रेशर ऑफ वो कर लो, I2 कर लो.
तो वो क्या होगा 1.6 डिवाइड बाय 5.6 इनटू 3 एटमॉस्फेयर और प्रेशर ड्यू टू HI कर लो तो वो क्या होगा दैट्स गोना बी 0.8 डिवाइड बाय 5.6 इनटू 3 एटमॉस्फेयर राइट क्लियर है यही होगा ना यस सर। और अब इसको कर लो वो इधर मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ PHI स्क्वायर्ड यानी ये स्क्वायर्ड है सो दिस इज आई एम डूइंग दिस हियर 0.8 डिवाइड बाय 5.6 इनटू 3 स्क्वायर्ड राइट ये न्यूमरेटर हो गया divided by the denominator which is उसमें PH2 और PI2 both will appear ठीक है ये दोनों so it's going to be 3.2 divided by 5.6 into 3 और फिर वो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है I2 के साथ so it's 1.6 divided by 5.6 into 3 clear है ये आ गया ना एक्सप्रेशन राइट यस सर। So I found the partial pressure. Remember, KP can you always have to find partial pressure, except for this case. Shortcut is even if you find it in this case, the answer would still be the same. अब ये देखो कि ये ऊपर 3 स्क्वायर है ना नीचे 3 है और इधर भी 3 है तो वो सारे 3 कैंसिल आउट नहीं हो गए यस सर। अच्छा ऊपर 5.6 स्क्वायर है नीचे 5.6 है 5.6 है तो वो 5.6 सारे के सारे कैंसिल आउट नहीं हो गए तो वो सब करने का फायदा क्या हुआ वो तो एंड में वही आ गया 0.8 डिवाइड बाय 0.8 स्क्वायर डिवाइड बाय 3.2 into 1.6 मतलब 0.8 स्क्वायर डिवाइड बाय 3.2 into 1.6 तो मतलब वो सारी एफर्ट जो है वो इट वाज कंप्लीटली पॉइंटलेस इज दैट क्लियर यस सर। तो ये एमसीक्यूज में ना मेक श्योर यू रिमेंबर द शॉर्टकट्स क्योंकि वरना एमसीक्यू का पेपर नहीं होने वाला क्योंकि यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस पेपर एक एमसीक्यू पे यू कैन ओनली स्पेंड लाइक इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस और फिर उसके बाद ऊपर से जितनी ज्यादा आप कैलकुलेशन बढ़ाते जाओगे ना उतने गलती के चांसेस बढ़ते जाएंगे ऑफ मेकिंग सिली मिस्टेक्स ठीक है सो रिमेंबर दिस कि व्हेन यू आर सॉल्विंग केपी और केसी if the number of moles in the equation are equal on both sides which means के numerator terms and denominator terms are equal तो बस simple moles enter करो you don't even have to find concentration in the case of KC and you don't have to find pressure in the case of KP वो direct mole से काम चल जाता है वो सब करने की जरूरत ही नहीं है सर तो हाँ ये तब जाके होगा जब लाइक वो कैंसिल आउट करो ना वो यूनिट्स उनके। हाँ हाँ मतलब यूनिट्स कैंसिल आउट या आसान तरीका ये कि इस साइड पे मोल्स और इस साइड पे मोल्स बराबर हो ठीक है तो तब याद रखना कि सिर्फ मोल से काम चल जाता है यू डोंट हैव टू डू एनी अदर कैलकुलेशन यू जस्ट पुट दोस मोल्स डायरेक्टली इनटू द एक्सप्रेशन दैट्स इट ठीक है इज दैट क्लियर और यस सर। specifically in that case if the moles are not equal then you would have to do the whole thing क्योंकि फिर ये ऊपर वाली नीचे वाली terms ना they're not cancelling out तो then you would have to do the whole thing ठीक है सर इसका आंसर 0.125 आ रहा है जो कि है हमारे पास यही है ना हाँ ये भी है ठीक है तो just make sure remember the shortcuts ये जल्दी से कर लेते हैं रेट का कि he's saying कि two chemicals X and Y react together in the solution to give product C. So it's the rate of formation. So ये rate है. This column over here is rate. The rate of formation of product G at the start of the reaction was measured in 5 experiments. So he's using different concentration. So he's saying which statement is correct. The rate of the reaction is directly proportional to the concentration of reagent X. अच्छा अब ये याद रखना experiments के अंदर. If you're trying to comment on reagent X only and you're trying to figure out के भाई rate of reaction and the reagent X यानी this and this what is the relationship between these two so you'll only consider those experiments in which Y is constant because all other variables have to be constant तभी आप experiment would make sense कि आप इसको change कर रहे हो ये change हो रहा है but all the other variables must be constant. That's how you investigate variables. ठीक है? So if you're investigating 2 variables, you have to keep all the other variables constant. So इसमें देखो, is it directly proportional? Like if I compare experiments, let's say experiment 1 with 4. So if I compare the two, तो वो तो constant है y. ये क्या हो रहा है? Double हो रहा है 0.1 से 0.2.
what is happening to the rate of the reaction? Is anything happening to the rate of the reaction? Like जिनके ऊपर मैं डॉट डाल रहा हूँ ना, No, sir. तो इसका मतलब है is it directly proportional? कि if I double the concentration, the rate should have doubled, right? Yes, sir. तो directly proportional नहीं है. नहीं है, वो उससे कुछ हुआ ही नहीं है, उसका मतलब है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा. It's not. So the first one is wrong. फिर वो कह रहा है कि y के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर y के साथ इन्वेस्टिगेट करना है तो फिर x, you will only consider those experiments जहां पे x would be kept constant. You're not going to change x, ठीक है? So let's talk about experiments 1 and 2, क्योंकि उसमें x is constant. अच्छा, तो ये डबल हो रहा है, वो कितने टाइम्स हो रहा है? Four double times. हो रहा है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? है sir. नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि डबल करो तो वो भी डबल होगा. वो तो डबल से भी आगे चला गया. Sir तो 4 times हो रहा है, नहीं होगा फिर. तो ये हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि बस वो डबल हो रहा है. अगर आप डबल करो या ट्रिपल करो तो वो भी आगे से डबल या ट्रिपल ही होगा, उसी के अकॉर्डिंगली. सो दिस वन इज नॉट. तो इसका मतलब पहले दो तो वैसे ही गलत है. और वो x का तो हमने पहले ही फिगर आउट कर लिया था. इट्स नॉट अफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ x, तो सी आंसर होगा, ठीक है. y वाला गलत है कि इट इज अफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ x. वो स्पीड अप कर रहा है, बस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही स्पीड अप कर रहा है, ठीक है. ये बात क्लियर है? Sir. हाँ. Sir तो क्या रीजेंट y के साथ तो भी तो like वो increase कर रहा था ना, effect तो था कोई. हाँ, तो इसलिए वो डी नहीं हो सकता. तो उसने कहा रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिएजेंट y. वो तो अफेक्ट हो. Okay, sir. हाँ, और वो तो कुछ ज्यादा ही अफेक्ट हो रहा है, वो तो डबल से भी आगे निकल गया, ठीक है. चलो ठीक है, ये फिर वैसे बीच में करेंगे. पेपर्स कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. और हाँ सर, और जो आपने स्टेट्स ऑफ मैटर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने किए हैं सर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने किया तो है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो तो थोड़ा सा ही है. स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली यही है कि बस ये उसके अंदर तो कुछ खास है भी. बस ये पीवीसी को एनआरटी के इर्द घूमता रहता है. मैं नोट्स भेज दूंगा, उसमें बस कुछ ग्राफ्स है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो चले ठीक है, ये कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है. ओके, अल्लाह हाफिज.